Bismillahirrahmanirrahim. This is Mir Shams working as a vocational trainer under the trade of travel and tourism at Government Higher Secondary School, Taratpura. Today my topic is communication with reference of body language. As we know that communication means sharing of ideas with other persons. So this means that when we share our knowledge, share our experience with other person, we have to communicate. And if the communication does not take place, the misconceptions will take place in the minds. So this stands for communication that when we teach in the class, we do the communication with students to explain the topics. When we listen to the speakers, he communicates. He expresses his ideas. He expresses his feelings. When he expresses them in an effective way, then we become in position to understand what he wants to convey. Suppose अगर communication नहीं होती है, that means we can't communicate with each other. We can't express our knowledge. We can't express our feelings. So this simply means communication means the sharing of ideas with other persons, or we can say that communication is the lifeline of all relationships. Communication is the lifeline of all relationships. हम अपनी बात से किसी को मना भी सकते हैं, हम अपनी बात से किसी को नाराज़ भी कर सकते हैं. तो इट मीन्स कि कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट in all aspects of our life, whether we are a student, whether we are a teacher, whether we are an employee, whether we are a boss, whether we occupy apex post in government sector. So this means that communication plays very important role in our lives. So here we have to the question here is that we have to reference of the body language. So आपको समझ आया होगा communication हम किसे कहते हैं. Communication simply हम कहते हैं sharing of ideas with other person, or we can say that communication is the lifeline of all relationships. So you have to be communication में दो persons होते हैं. One is a sender and other one is a receiver. Sender is one जो अपनी बात दूसरे तक पहुंचाता है. रिसीवर वो होता है जो बात को समझता है, जहां हमें बात पहुंचानी है. So here is now body language. बॉडी लैंग्वेज जब हम बात करते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आवर बॉडी मस्ट बी इन ए पॉजिटिव मूड. आवर बॉडी should have those gestures which convey our message very strongly to the receiver. Suppose हम कह सकते हैं कि जब हम पब्लिक बोलते हैं तो इट मीन्स कि like all the things takes place according to our पॉजिटिव लैंग्वेज. लाइक अगर हम कहीं पे काम करते हैं तो अगर हमारी बॉडी दैट इज़ लाइक डाउन, सो दिस मीन्स कि वी आर नॉट इन पोजिशन टू कन्वे आवर मैसेज इन ए प्रॉपर मैनर. सो हम बॉडी लैंग्वेज को हम गेस्ट्रल कम्युनिकेशन भी हम कहते हैं. बॉडी लैंग्वेज इज ऑल्सो नोन एज
gestural communication. Gestural communication, because हमारी बॉडी में क्या आता है, मोमेंट, हमारी बॉडी में क्या आता है, मोमेंट ऑफ आवर बॉडी पार्ट्स. इसमें क्या क्या आते हैं, लाइक आइज, हेड, हैंड्स, legs, sting style, and walking. So इसको हम कहते हैं, these all the components like eye, hand, eye, hand, head, legs, sting style and walking. इसको हम कहते हैं when we convey our message, when we use our body parts to convey a message to a particular person. So हम इसको कहते हैं, this is called the body language, called body language. So the first thing comes eye contact. आई कंटैक्ट से क्या होता है, दैट हम जब किसी से बात करते हैं, व्हेन वी कंट्रैक्ट आवर आइज विद अदर पर्सन, एंड दिस गिव्स हिम ए मैसेज दैट ही इज़ वेरी सीरियस, ही इज़ वेरी पॉजिटिव. जो बात हम तक वो पहुंचाना चाहता है, हिज आइज आर ऑल्सो कन्वेइंग दैट मैसेज टू हिम. So this means that we can say that eye contact shows respect and interest what they have to say. They have to say. It means lack of eye contact means we are not very serious. We does not signify. We does not provide our keen attention to the receiver. So this means कि आंखों का बहुत हम इस्तेमाल करते हैं बॉडी लैंग्वेज में. एंड सेकंड वन इज हेड पोजीशन. हेड पोजीशन प्लेज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन बॉडी लैंग्वेज. बेसिकली if we stand tall and keep our head straight, neither we put our head vertical nor horizontal, and we put our head straight and convey a message to the receiver, convey a message to the public. That also stands that we are very very much positive in terms of conveying a message to the recipients, to the recipients. And the arms, movement of arms, and second one is here head position, and third one is arms, movement of arms. जब हम अपनी बाजू को हिलाते हैं बात करते करते, दैट ऑल्सो गिव्स द फीलिंग, वी गिव्स द सिग्नल्स. हम अपने हाथों से, अपने आर्म से सिग्नल करते हैं कि व्हेन अगर हम कम्युनिकेशन में लाइक हमने आसमान का जिक्र किया है, ज़मीन का जिक्र किया है, वी इंडिकेट, वी सिग्निफाई, हम अपने हाथों को ऊपर उठाते हैं, उस इंडिकेट करते हैं दैट स्काई. व्हेन वी इंडिकेट अ पर्टिकुलर पर्सन, हम उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हैं, उसका नाम भी लेते हैं, उसका हाथ भी बढ़ाते हैं, उसको इंडिकेट करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्सन. दिस मीन्स कि आर्म्स ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन बॉडी लैंग्वेज एज वेल. एंड head get mouth moment, and fourth one is mouth moments. हम किस तरह अपने माउथ को मूव करते हैं while selling our words, while delivering a lecture, while doing the public speech. That the most important part of the mouth is lips. When we twist them to the side, when we are thinking or something, we use this moment to hold back
as an angry. That means the movement of lips is also important in the positive language. This stands for when अगर हम बात करते हैं और like we do not use our body language while speaking, while teaching, while delivering a public speech, or if we are a like we're working as a boss and we do not use our body language, and that conveys like this man is not serious, he's just like उसने बात बोली तो बोल दी. But body language also plays a very important role in the communication. So these were the points which I highlighted. I, body position, head position, arm position, mouth position, and more importantly, postures and gestures also plays very important role in the body language. So इसको body language को हम gestural communication भी कहते हैं, which signifies जो हम like अपनी body से इशारा करते हैं, which that signifies that we're very serious in the communication. Have a nice time. Bye.